Hi, I am Dr. Harsha. I studied medicine to treat human ailments. By choice, however, I became an investigative documentarian. And like many Indians, I grew up eating meat and eggs. I used to enjoy eating all kinds of meat. Even then, I called myself an animal lover, as I was proud of my food choices. Most people openly admit the cruelty in the meat and egg industry. But when I asked if they ever thought about avoiding milk and milk products because of the cruelty associated with it, I received resistance. Common responses I received were, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता. लेकिन भगवान को तो दूध पसंद है ना. ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. यो तो भाई किसाना की जिंदगी ना बर्बाद करने वाली बात है. हम तो सिर्फ गौशाला का ही दूध पीते हैं. Relax, okay? The cows are safer than women in India. প্রথমে না মানুষের ভালোর বিষয়ে ভাবুন. I couldn't understand why when it comes to dairy, people in general could not believe there can be cruelty involved in producing milk. In the West, the relationship of humans with cows is purely economical. It begins with the cows getting artificially impregnated. The cows then deliver babies who are then immediately separated from their mothers. The milk is denied to the calves and is taken solely for human consumption. When she runs dry, the mother cow is slaughtered. If the calf is male, he is killed for veal and soft leather or is sent to beef farms, where he is fed until he grows big, only to be slaughtered. If the calf is female, she is raised as a replacement for her mother, and this cycle repeats. In many ways, vegetarianism is a result of how ethics, compassion, and rationality have evolved. But is vegetarianism still a rational choice today? In search of answers, we visited a local dairy farm. कितने साल रखते हैं आप उसको? कितने बार प्रेग्नेंट होने के 4 या बाद? 5 बार. 4 या 5 बार. तो बाद में क्या होता है, उनका उम्र कम होने तो दूध भी कम हो जाता ना. फिर तो उसको रख के आप लोग को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि इधर सब बिकट का लाने को. इधर आपने कोई खेती नहीं कि खेती से खिला सकते, उनको करके रखते हैं ज़्यादा से 4 या 5. तो वही पैसे में दूसरी नहीं लेने के लिए. During my visits to dairy farms, I happened to meet an artificial insemination inspector who was present at the dairy farm to impregnate animals. ये सीमन लेते हैं सांडों से और सीमन डालते हैं गाय के अंदर. अब जो गाय के अंदर सीमन डालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, क्योंकि आप एक मशीन लेकर के अंदर सुई डालते हैं. जैसे औरत को जब इम्प्रेग्नेट करना होता है तो IVF बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ होती है. लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसे लोगों को रखे हैं जो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग मिलती है, और वो भी बेरोज़गार किसी इंसान जो लिखा पढ़ा नहीं है उसको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो किट पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जाओ इंसेमिनेटर बन जाओ. बीफ इंडस्ट्री जो है वो बिना डेयरी के पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक गाय या भैंस को इतने साल खिला के पालना बड़ा महंगा पड़ जाएगा. तो वो जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट डेयरी वाले कराते हैं. डेयरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो इतना आसान नहीं होगा बीफ मिल पाना. As the dairy consumption increased over the decades, the population of animals also went up, mainly through industrial breeding practices. This massively increased the scale of beef and leather exports from India. Unlike the rest of the world, in India, the dairy farms are inherently designed keeping in mind the beef industry and other byproducts. They keep the beef industry in business. What this ultimately means is that consuming dairy products is the same as supporting the slaughter of these animals. The reason why many of our ancestors adopted a vegetarian diet is similar to why we should adopt a vegan diet today. May this be the next step in our evolution. It is time to end this cruelty.